Okay, let's we start. Okay, this is the related to the Thevenin problem, Thevenin theorem. Okay, my voice is clearly audible now. Yes, sir. Okay, Yes, this sir. is a this is a problem related to your Thevenin theorem. Okay, I already discussed with lot of problems like one, two, and problem number one, two, and three related to the Thevenin theorem. Okay, similarly, this is the problem I have chosen to solve here regarding your Thevenin theorem. Okay, then what are the steps? Anybody can tell? What are the steps we are following during the solving of the Thevenin theorem? Can anybody tell? So first First, we remove RL. remove the RL and redraw the circuit. Okay, then Then find Find VTH. VTH. then Then we Find 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 RTH. RTH. okay, then Then reconnect the circuit using VTH, RTH, and RL. okay, and find the IL circuit. Can anybody find out how to? First step one. Okay, visible. The board is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then first, as per the rule, I have to omit. I have asking here to find I8 ohm. That means I have to calculate the current in this branch. Suppose this branch name is A and B. Okay? Is it okay? Then I have to first eliminate according to the step one and rule number one. I have to eliminate the load resistance that is equal to 8 ohm. Okay, then redraw the circuit. Then after this redrawing, the circuit is looking like yes or no. I just put the values 5 ohm, then 10 ohm, then again 10 ohm. This is your 8 ohm is open circuited now. 8 ohm is eliminated from this figure. Then again 5 ohm, then 4 volt. Is it okay, all of you? Yes, sir. Then come to the point how to first what is the after the step one, then in step two I have to find out what find the open circuit voltage. I can write down the open circuit voltage, or otherwise it is known as VTH. Yes or no? Yes, sir. Then my point is I have to find out this voltage. This is known as your open circuit voltage. I can write down here, this is your voltage. I have to find out this voltage. Okay. But again, I already mentioned that during the finding of an Thevenin voltage, you have to choose a closed path, a closed shutter path. Which one is the shutter path? You have to find out this is the shutter path. You can see if this is a loop, this is a loop A, B, and this is a loop, then definitely it will be a shutter path rather than this path. Okay, therefore I have to choose only this loop, and I have the voltage that is your 4 volt, but you have a resistance here 5 ohm. Okay, and how to convert it to the voltage? Then you have to calculate this current. If you have to calculate this current, then definitely
this voltage you will find out, and you can calculate VTH. Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Before I have to calculate, I am going to calculate to the VTH. You just do one thing. You just calculate this current. Okay, this current, and you just forget that there will be a point A and B. You just forget. Okay, after open circuited, the current will flow in this way. Okay, if it is open circuited, then definitely the current will flow in this way, in this direction. Okay, you just forgot that there is a 2 points are there, A and B. You just forgot. Okay, and calculate the current. How to calculate the current? You can see here here is a voltage source, that is your 2 volt voltage source, and you are entering a current in this circuit, that is your this current. Suppose this current is your I1, and the current is divided in these two parts, that is your I2 and this is your I3. Okay, then how to calculate your I3 and I2? You have to calculate the I3 and I2 by using, here I am using the nodal analysis method. Okay, for the simplicity I am choosing here to calculate the nodal analysis method. You can see here how many nodes are possible here. How many nodes in this circuit is possible? 2. Two, sir. Two. That's two. Two, Very sir. good. Two. Very good, very good. That is 2 nodes, because here one is, suppose this is your Vx, and another node is here in the grounded part. Okay, this is your, suppose, Vy. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now find the open, before I have to find the open circuit Thevenin voltage. I have to calculate what? I have to calculate this current, I2 current. Okay. Then how I am calculating the I2 current? I know that according to the KCL, what is the formula? Apply KCL at node Vx or X node. What is the formula now? You can see here, this is the incoming current. This I1 is equal to I2 plus I3. Yes or no? According to the KCL. Yes. Is it Yes, okay? sir. Yes, sir. Okay. Then how to calculate your I1? First, look at this. This side is current is flowing. The grounded voltage, that is your Vy minus minus. This is your minus symbol. This is your cross symbol. That means the voltage is positive. Okay, 2 volt. Then again this is your voltage, that is your minus Vx divided by, this is your resistance, that is your 5 ohm. Is it okay or not? How to Yes, sir. calculate the I1? How to calculate I1? There is voltage source Vy, 2 volt the DC link voltage or DC voltage, and another voltage is Vx. Vx, the total voltage divided by your 5 ohm resistance, that is you can calculate from I1. Is it okay? Tell me. Hmm. Is it okay? Yes, sir. Then is equal to, how to calculate I2? This is your I2. Then tell me how to calculate. Vx minus 4 minus Vy by 15. Vx minus 4 minus Vy by the total resistance. See here, this is your Vx, this is your 4 volt. Okay, this is your DC link voltage, plus or minus. That means that is minus 4. Then again Vy minus of Vy. The total resistance is 10 ohm plus 5 ohm. That is your 15. Okay.
Now calculate I3. How to calculate I3? This current. Vx minus Vy Vx minus minus Vy divided by 10. very good 10. And everybody knows that Vy your reference voltage. I can eliminate here with 0. Then what is the value? You just see 2 by 5 minus Uh, Sir, there is a call coming. okay 2 by 5 minus Vx by 5. Is it visible? Yes, sir. Then Vx by 15 minus 4 by 15, okay, plus Vx by 10. Is it okay? Yes, sir. yes, sir. Then solve and find the Vx value. Just solve it. What is the value? Just tell me. Hmm. What is the value? 3.33. No. 20 by 11. Yes, बराबर 20 by 11. You just press the D. Just tell me the decimal value. In calculator, you just calculate the decimal values. That will come 1.812. I think 8182 voltage. Okay. Then now, after calculating the Vx, you can calculate this current I2 current, because I know that from this formula I2 is your this formula. Then putting this formula here, how to calculate the I2? I2 is equal to Vx minus 4 divided by 15. That is equal to 1.8182 minus 4 divided by 15. What is the value? That will come minus 0.1455 ampere. Okay. Now I am computing this current, this I2 current. Okay. I already mentioned that during the calculation or during the calculation of the VTH, you choose the closest path to calculate the VTH. How to choose the closest path? You can see here, if this is your closest path, this is your Thevenin voltage, then definitely this Thevenin voltage means this is your open circuit voltage. Okay, and you can see here, this is the closest loop I can mention here, and you just put the closest loop like this.
then only you can calculate the Thevenin voltage. Okay, this is, and I just got the current here. Okay, and this is your, I have to calculate this voltage. Then just put a loop here. Okay, and by putting a loop, then how to calculate? This is your open circuit voltage, and you just see the current is going this side. This side means this is your positive terminal, and the current is entering, and this is your current is leaving. That is my minus, plus and minus symbol given, and you can see the higher potential. This is your higher potential, that is means this is positive, and this is your negative. Okay, and I just put here positive. That means your A point is positive, containing the positive potential, and B point is directly containing near the negative potential. That means your current is going minus to plus. That means your VTH is becomes positive VTH. Then plus to minus, current is going. That means this is your minus side, minus of 5, and what is your current value? That is your I2. I2 is minus 0.1455. That means you can write a minus of 0.1455. Okay. Then again, this is your voltage. This is plus or minus. That means this is your 4 volt is equal to 0. Applying mesh analysis, you can solve here VTH, and by calculating, or by putting all the values, you can find out the Thevenin voltage. What is the value? Thevenin voltage. Just calculate this value. This is a multiplication. This is plus and minus 4. You can calculate the value becomes 3.27. 25. Very good. Sir, minus 37. Minus. How minus? Plus हो. इक्वल टू के Just- उस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस होगा प्लस प्लस होगा Is it okay? यस Just सर check it. Okay, now your VTH Sir. calculation is over. Yes or no? सर यस सर ये क्या कहते हैं, दूसरे साइड वाले मैच को लेने के लिए वो बन जाएगा क्या? What? Just सर ये speak. दूसरा साइड वाला मैच, ये जो अपोजिट साइड वाला इस- मैच है उसको लेने से बन, हाँ इसको यस सर you just see when you are considering this loop. Okay. नो सर Then सिर्फ मैच you वो are लूप में सिर्फ ये आधा साइड, मतलब ये आधा 10 ओम तक। ये वाला this side. This side. यस You can see here when you are calculating this side, then you have to consider two current values, I2 and I2. Okay, but here I am only considering I2. I2 mentioned here, you just choose the simplest part or the easiest part. Why you are considering this side? If you are considering this side, then again the current will divide here. There is a problem during the calculation. But here you just see there is a one current is flowing in this circuit. That is the simplicity. Therefore, I am just choosing the closest part. Okay. And you only focus the closest part. Okay, in every question you just see that I have chosen only the closest part and one current is flowing in this circuit. Okay. सर Yes. सर वो Vx माइनस 4/15 वो, और एक बार समझा दीजिए ना, Vx माइनस 4 कहाँ से आया? Yeah. नहीं वो नीचे During I2 calculation. I2 is equal to Vx minus 4/15. Yeah. You are asking that question, though, really? Yes sir. You just see here when I am calculating here, I2, what is the value? You just see, I have mentioned, you just see here, this is your Vx. I have eliminated this part, okay? And what is the potential? One potential is your Vx, another potential is your 4V. Okay?
This is the two voltage sources Vx, and here is 4 voltage, and another potential is your grounded. Your reference you can see here Vx 4 voltage, and this is your ground voltage. Okay. First, I am telling in the node analysis, by using the node analysis, I have mentioned there that you just consider how to calculate the current, because the voltage, the summation of all the voltages divided by the total resistance, then only you can calculate the current. Is it okay? Yes, sir. You can see here, this is your Vx. Okay, this is your Vx, and the potential is cross to minus, that is your minus 4, because cross to minus the current is going, that is your plus or minus 4. Okay, again that is a grounded potential. Grounded potential you can write down the minus potential. This is your overall potential drop. Vx 4 voltage and Vy. You can see this side. This is your where the I2 current is flowing. I2 current is flowing like this. Okay, I2 current is flowing in this circuit only. That means during the I2 current is flowing, how many potentials are coming to your mind? One potential is your node potential, that is your Vx. Another potential is your 4 volt, and another potential is your grounded potential. That is the voltage potential. If you are dividing your voltage divided by your resistance, then only you can calculate the current I2. You can see the potential Vx, then 4 voltage, then Vy. I have just Vx minus 4 minus Vy, because this is the potential drop in between Vx to Vy. Overall potential drop, we can see your overall potential drop is Vx minus 4 volt, then minus Vy. This is a drop. Drop, how to calculate drop in between 2 points? That is A minus B, that is your drop. If I am considering the A to B current is flowing, A to B, I2 current is flowing, that means that how to calculate the drop? A minus B, similarly Vx minus 4B minus Vy. This is the point. Divided by 10 plus 5. Series resistance, this is your 15 ohm. Okay, and I have just calculated like this. This is your I2. Just after getting the Vx value, I have putting here I2 equal to Vx minus 4 divided by 15, and already I have got the Vx value, and just put the Vx. Then I am calculating the current value I2. Is it okay? Yes, sir. Okay. After getting your VTH, now I am entering to your step 3. Now see step 3. According to the formula, what is the role of step 3? Step 3 में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर? RTH. Finding RTH. Yeah, finding RTH from where? From A and B point. देखिए पहले जब मैं थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेशन कर रहा था, तो उसमें क्या कर रहा था, ओपन कर दिया तो करंट कैलकुलेशन करके उसके बाद रूप लेके थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करा. मगर जब हम लोग आरटीएच कैलकुलेट, ड्यूरिंग द आरटीएच कैलकुलेशन you have to consider the points A and B, and fixing the A and B point, you have to calculate the resistances like this. You can redraw again the circuit, and I already mentioned that after eliminating RL, okay, you have to redraw the circuit. During the finding of RTH, you have to replace all the voltage sources or current sources with their internal resistance. Okay, now here the internal resistance is the voltage of the voltage circuit is 0. That means the voltage is short circuited. Okay, now this is your voltage 2 volt, that is short circuited. Now coming to the point, there is a resistance is connected here, another resistance is connected here, again there is a resistance is connected here, and after this there is another resistance is connected here, and this is just short circuit path. Okay, and I have to calculate
the RTH from A and A to B point. Okay, you have to calculate RTH. Is it okay? The diagram is okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Anybody have doubt? यहाँ पर मैं क्या किया, जो वोल्टेज सर्किट था उसको मैं क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। 2 वोल्ट था, यहाँ पर 4 वोल्ट था, ये कुछ काम का नहीं है, शॉर्ट हो गया। अभी अभी मुझे कैलकुलेट करना है आरटीएच को। तो आरटीएच को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अभी आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं, देखिए ये जो पॉइंट है, मैं वो क्या बोला, ए से बी तक आपको करंट कैलकुलेशन करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यही पॉइंट से आपको जब देखेंगे करंट यहाँ से इन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट इन कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। सपोज यहाँ पर आपका आई करंट इन कर रहा है, तो ये आपका I1 एंड I2 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Then that means you can calculate, you can see here that these two resistances are connected because current is divided. That means these two resistances is connected in parallel and this is in series. That means I can write down 5 parallel 10 ohm plus 10. This is your resistance, one resistance, and again there is another resistance connected this side. This is the point. This is the value, and here is also 5 ohm is connected. Then this is your point A and point B. Is it okay? Yes, sir. Everybody clear this point? How to solve this graph to, or this circuit diagram to this simpler circuit diagram? And what is the resistance value, how I am calculating? Is it clear, Yes. everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Now I wrap this section. Okay. Okay. Just calculate this value. What is the resistance value? Just tell me. Hmm. 40/3. This is your 40/3. decimal में बोलो. Decimal. 13.33. 13.3. 13.33, right? This is equal to Yes, sir. 13.33. यहाँ पर और एक बात आप लोग देखिए, अगेन मैं कहां पर देखूंगा आरटीएच, दिस पॉइंट पे। फिर से आप लोग देखिए, जब अगर मैं करंट यहाँ पर ए में फ्लो कर रहा हूं और ए से मैं फ्लो करूंगा, तो डेफिनेटली देयर इज टू अपोजिट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए। दैट मींस दिस इज पैरेलल टू दिस सेक्शन। यस और नो? If I Yes, am sir. showing a current a point, then definitely this section, this resistance is parallel to this resistance. यहाँ से एक को बी जा रहा है, यहाँ से भी एक को बी जा रहा है, मगर दो अपोजिट करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन होगा, तो सर्किट को रीड्रॉ कीजिए फिर। थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री है ना, 33, देन अगेन यहाँ पर है 5 को। अभी कैलकुलेट कर पाएंगे आरटीएच? 3.63. 3.63. Sir, वेरी 3.63. गुड। Okay, your RTH is 3.33 ohm. Is it okay? Step 3, everybody clear? Step 3 सभी का क्लियर हुआ? स्टेप 4 को जाऊं अभी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now coming to step 4.
What rule number 4 is telling to us? Just by after calculating your Thevenin voltage and Thevenin resistance, you just draw the Thevenin circuit or Thevenin draw the Thevenin equivalent circuit. Okay, then draw the Thevenin equivalent circuit. then कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ये आपका हो गया VTH. VTH आपका कितना कैलकुलेट हुआ था? बोलिए. 3.2725. Very good. Then I have also calculated the RTH value. This is your RTH. RTH is calculating from here 3.33. This is my Thevenin equivalent circuit. बन गया अभी. अभी स्टेप 5 हम लोग को बोल रहा है. By connecting the eliminated RL across the 2 points. This is your point A and point B because I have eliminated this point. And after drawing the Thevenin equivalent circuit, you just again connect the RL load or RL resistance here. You just connect here. This is your RL resistance. This is your circuit. And from A to B point, I have just connected another resistance, that is your RL, which is eliminated from the previous, from the circuit, from the starting. That is your 8 ohm. And here I am calculating 3.33 ohm. And your voltage is 3.2725. Is it okay? Now you can calculate. My question is asking, calculate I8 ohm. Now you can calculate I8 ohm. This current you can calculate now. Yes, sir. So 0.2811. Huh? 0.2811. By putting the formula, you just, this is your voltage 3.2725 divided by your total resistance, that is your 3.33 plus 8, that is your value 28. 2811. सर आरटीएस 3.63 होगा. 3.63. हाँ 6333 नहीं. ओके. अरे ये तो कैलकुलेशन है. मतलब आप लोग को ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है कि नहीं है? कैलकुलेशन जो है आप लोग कीजिए, कैलकुलेशन प्रोसीजर समझिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. जो 33 लिखेगा, जो उनके पास आंसर होगा उसी से वो मैच करेंगे. ठीक है, मगर आपको प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए. इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो Yes, आप इजी sir. प्रोसीजर से Yes. सॉल्व करने से इजी होगा. ठीक है, Yes, ये sir. आपका हुआ 3.63, राइट. ये आपका बन जाएगा करंट 0.28, आई थिंक. 2811. Yes. Very good. 2811. और मैं आपको पहले क्लास में बोल रहा हूं, जब हम लोग करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो आप उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है. ये वोल्टेज सोर्स से करंट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड. इसका मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ से डाउनवर्ड होगा. ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना होगा डाउनवर्ड. ये आप एम्पियर लिखेंगे और डाउनवर्ड. किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए. सर हाँ, ये जो आई जो करंट आया इसमें जो डायरेक्शन है वही मेन सर्किट में भी वही डायरेक्शन होगा. क्या बोल रहे हैं? मतलब इस जो स्टेप 5 में जो आई का डायरेक्शन आया वो वही डायरेक्शन मेन सर्किट में भी होगा. हाँ, मेन सर्किट में भी होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन पूछा है इसका बीच में कितना करंट फ्लो करेगा. ये करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ. अभी से भी बोल दूंगा कि करंट ऊपर से फ्लो करेगा. कैसे? देखिए यहाँ पर ये भी प्लस और माइनस है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है, तो डेफिनेटली करंट यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से करंट डेफिनेटली फ्लो करेगा. ये पता चल गया. मगर हम लोग कैलकुलेशन से उसको प्रूव कर रहे हैं कि बाबू यहाँ से करंट ही डाउनवर्ड फ्लो करेगा. कैसे? ये हम लोग सर्किट उसको रिजर्व करके सर्किट कैलकुलेशन करके हम लोग कैलकुलेट किए, राइट. इस क्वेश्चन में और किसी का डाउट? No, sir. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ओवर.
इसके बाद अभी कौन सा क्लास है आपका? इंग्लिश। टाइम कितना बचा हुआ है? 20 minutes, 15 minutes. फाइन फाइन। अभी और एक मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नॉर्टन पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो Yes, थेवेनिन sir. पूरा क्लियर हो रहा है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी ट्यूसडे को हम लोग करेंगे इसके ऊपर, Yes, sir. तो उसमें भी और थोड़ा हार्डवेयर के साथ आप लोग एक्विंटेड होके उसको भी कर देंगे। कौन कौन इसको सॉल्व कर पाएगा? कौन सा वैल्यू निकालना है, कौन सा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैल्यू निकालना है आई का? यस यस, दिस 20 ओम के केस में आप लोग को निकालना है, वो है आपका आई 20 ओम। फाइंड आई 20 ओम is how much by using Thevenin। कौन कौन निकाल पाएगा इसको? बॉयज तो मुझे पता चल रहा है कि 4-5 कर रहे हैं, मैं गर्ल्स में कौन कौन सर निकाल पाएगा? आरएल कौन सा है? लिखा हूं करंट, करंट जिसमें पूछ रहा हूं वही आरएल होगा। क्वेश्चन में अगर आपको आरएल नहीं मेंशन किया होगा तो करंट जिसमें पूछा होगा उसी उसी को आप वो आरएल मान के चलना होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलिए, गर्ल्स में कौन कौन सॉल्व कर पाएगा इसमें? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। पहले ये देखिए, हाँ बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। करंट सोर्स को हम इसमें क्या कहते हैं ओपन करेंगे। किसको ओपन करेगा? जिसमें करंट पूछा है उसको ओपन करेंगे। तो करंट सोर्स को, करंट सोर्स को क्यों ओपन करेगा? पहले मैं तो करंट इसमें पूछा हूँ 20 ओम में, यहाँ पर तो करंट पूछा ही नहीं, ये तो करंट गिवन है नहीं यहाँ पर। सर, नहीं सर, वो थर्ड स्टेप में जिसमें सोर्सेस हटाना रहता है। हाँ, पहले स्टेप 1 से चलिए बाबू, स्टेप 3 को क्यों चला गया? पहले स्टेप 1 में ये इसको मैं एलिमिनेट करूंगा, ये वाला अभी मैं इसमें करंट पूछा हूं तो आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो ये अगर ए और बी पॉइंट हो गया, मैं अभी स्टेप 1 में क्या बोलूंगा? आपको बोल रहा हूं कि एलिमिनेट द लोड resistance value is given, that is equal to 20 ohm, okay? And redraw the circuit, this circuit, you when you are redrawing this circuit, that is you have to put the voltage potentials 12 volt. Again there is, sorry, this is open because I am eliminating this part. Then again you have an current source, current source is your downward, then this is your 5 ohm, then 15, 30,
और मुझे पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट दिया गया है निकालने के लिए, ये पॉइंट ए एंड बी, और वैल्यू आपका गिवन है 12 वोल्ट, ये आपका 12, ये आपका 5, 15, यहाँ पर 4, 30, देन 8 वोल्ट 4 एम्पियर। ये सर्किट बन गया आपका अभी। यस सर। सर्किट में कुछ गलत है क्या? सिर्फ मैं लोड रेजिस्टेंस को हटाया हूं, यस और नो? यस सर, ठीक है। यस सर। अभी मैं पूछ रहा हूं आपको, ये जो पॉइंट है ए एंड बी, राइट, इसके अक्रॉस में आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? फ्रॉम स्टेप 2 I just write down, in step 2 I have to calculate the open circuit voltage, that is your Thevenin voltage, from which point A and B point में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ए भी, इसको मैं बोलता हूँ VTH। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज ये दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा तो इससे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पाथ कौन सा है? क्लोज सर्किट किससे बन रहा है? ये वाला सर्किट से बन रहा है। देखिए अगर मैं इसको एक लूप मानूं तो ये वाला सर्किट बन रहा है, ठीक है? A to B, this circuit is looking like a faster closest path, right? Then before I am calculating this voltage, I have to calculate this current only. This current I have to calculate, this current or this current. Yes, sir. Okay. Then how to calculate? You just see one thing. There is a current source is given. Okay. Then you have to put here the same nodal analysis. Okay. And you just first pick out the, I have to calculate this current only. Okay. Then before I am calculating this current, I have to solve this circuit. Okay. Then just put the nodes, and how many nodes here is possible? 3. Loudly. 3 node. 3 node. 3 3. Very good. 3 nodes are possible. In which point? 1 is here. This is a node. Because 3 से ज्यादा element connected है, 1, 2 and 3. I can write down here. This is your VX. And again, this is also a node. यहाँ पर भी 3 एलिमेंट कनेक्टेड है एक पॉइंट पर, जहां से 2 से और 2 से ज्यादा होगा एलिमेंट कनेक्टेड होगा, उसको हम लोग एक नोड मान लेंगे। ये मैं पहले क्लास से बोल चुका हूँ नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के वक्त। तो ये आपका हो गया VY। ओके, नाउ ऑल द पॉइंट्स आर ग्राउंडेड एट द सेम पॉइंट। दिस इज योर ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। आई कैन राइट डाउन द रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो हियर 0। ओके, now you can calculate the current. You suppose here is current is flowing I, and this point is current is divided. This is your I2 and I3. Then again this is your I4 and I5. Like this you have to calculate it. Then first applying KCL at node VX और X नोड पे आपको वोल्टेज KCL डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए करंट, दिस इज योर I1, द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द VX, and definitely two outgoing currents are there. Then I1 is equal to I2 plus I3. You just write down here I1 is equal to I2 plus I3. Is it clear, all of you? Yes sir. Yes, now, sir. Now just write down here how to calculate the I1 point. Here the current is here, then you just calculated the potential drop between 0 to Vx, because the current is moving in a clockwise direction. That means the potential drop is 0, माइनस से प्लस करंट जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 0 प्लस 12 वोल्ट, then again minus of Vx. That is the value how to calculate 0, because ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 12, then again the potential is minus, because I am calculating the potential drop in between 0 to Vx point. That means you have to 0 minus 12 volt, then again minus of Vx and minus 12 volt, because यहाँ पर करंट जा रहा है ऊपर से नीचे से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो that means I am written here plus.
ओके, अगर ये प्लस नीचे प्लस होता ये माइनस होता तो डेफिनेटली प्लस से माइनस अगर करंट जाएगा तो उसको मैं क्या लिखता, माइनस लिखता, राइट। बट अभी क्या है रे, माइनस से प्लस जा रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं प्लस। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट 0 12 वोल्ट एंड Vx, कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर है, ओनली 12 12. ओम रेजिस्टेंस। दैट मींस आई हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, okay, 0 plus 12 minus Vx divided by 12. My voice is now audible? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hello? Yes, sir. My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, हाँ। Okay. Okay, my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now 0 plus 12 minus Vx by 12. Okay. Then how to calculate the I2? Vx minus Vi by 5. Vx minus Vi by. One second. I just reconnect my Bluetooth. Yeah, my voice is now audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Okay, now I2, how to calculate the I2? I2 is the current is given here, that is 4 ampere. I can write them simply 4. Now, now you can see I3 how to calculate? You have to calculate the potential drop, that is the potential drop is Vx minus Vy. You just added up potential drop Vx minus Vy divided by how much? This is your resistance, that is your 5 ohm. Is it okay? Yes, sir. Now we just solve this circuit or this equation. You have 1 minus Vx by 12, then 4 plus Vx by 5 minus Vy by 5. You can solve it like this: Vx by 5 plus Vx by 12, then again Vy by 5 equal to 4 minus 1. This is your equation number 1 becoming Vx plus 5, then Vx by 12 minus Vy by 5 equal to 3. This is your equation 1. Yes or no? Yes, sir. सभी लिख लिए इतना तक? Yes, sir. मुझे इसको रब करना पड़ेगा. रब करो इसको. Yes, sir. Yes or no करो. Yes, sir.
जो नहीं किए हैं वो वीडियो देख के कर लेना, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम लोग आते हैं, क्योंकि नोड अभी मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग KCL एट नोड y और Vy। तो यहां पर देखिए, ये I3 इज इनकमिंग, देखो यहां से I3 जा रहा है, आउटगोइंग इज I4 एंड I5, यस और नो। तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 होगा। तो I3 का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 इज इक्वल टू I4 कितना होगा Vy माइनस 0, क्योंकि मुझे ड्रॉप चाहिए, Vy माइनस 0, 0 को मैं एलिमिनेट कर दिया, Vy बाई 15 प्लस I5 यहाँ पर लो वोल्टेज सोर्स है Vy, एंड यहाँ पर करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मींस Vy माइनस 8 वोल्ट divided by your resistance is 30, and then again calculate the equation Vx by 5 minus Vy by 5 equal to, or you can write down here, plus minus Vy by 15 then minus Vy by 30 इक्वल टू -8 by 30। यही होगा इक्वेशन, सभी का आ रहा है ये। यस सर। अगर इसको इस साइड ले जाए और इसको इस साइड ले, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, माइनस Vx by 5 है कि नहीं, माइनस Vx by 5 प्लस यहाँ पर Vy कॉमन ले आता हूँ, 1 by 5 प्लस 1 by 15 प्लस 1 by 30 इक्वल टू 8 by 30। यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। किसी को डाउट है इसमें, बोलिए। नो सर। किसी को नहीं है, ये सिंपल नोडल एनालिसिस में डाला हूं इसमें, और इसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अभी कितना टाइम है बोलिए तो ये देखिए। सर खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग, मैं एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पर आप लोग VTH कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको मिल गया, दोनों इक्वेशन, राइट। यहाँ से 2 पैरामीटर आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं Vx वैल्यू और Vy वैल्यू by solving equation number, by solving equation 1 and equation 2 you can find out Vx और Vy। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कौन से करंट को, आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ I1 को, बिकॉज आपको ये करंट चाहिए। तो यह करंट जो चाहिए, I1 का फॉर्मूला में लिखा था क्या, वो आपका होगा Vx माइनस, यहाँ पर लिखा था, सॉरी Vx नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 12 वोल्ट माइनस Vx। देख लेना I1 करंट जो मैं इसका पहले जो किया था, 12 माइनस Vx डिवाइडेड आपका कितना होगा 12, और यहाँ से आपको Vx का वैल्यू पता चल गया होगा, तो ये आपका I1 आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वंस यू कैलकुलेटेड द I1, द सर्किट, हाउ टू कैलकुलेट द योर VTH, this is the circuit, this is your 12 volt, you have to calculate, this is your A and B point, you have to calculate the VTH, this is your VTH, and this is your 12 volt. Already I have calculated the current here, I1, by using the here you can calculate the I1. Then again making it a closed loop, you can write down the equation, that is your 12 volt minus, this is the value is your 12 into your I1 current, okay. Then again you can see here, this is your plus and minus, and that means your minus potential is A point and B point, माइनस से प्लस करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस VTH इक्वल टू 0, और ये जो आपका कैलकुलेट करेंगे तो VTH का वैल्यू निकल जाएगा।
होगा सभी का? यस सर। यस ये सर। I1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये I1 वैल्यू डाल देना, तो ये VTH इक्वल टू ये इससे ले जाना, VTH कैलकुलेशन हो गया। सभी का क्लियर हुआ ये VTH? और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका RTH निकालूंगा। ओके सर। बोलिए सब लोग, यस सर। सभी का क्लियर हुआ Yes, गाइस sir. आप लोग का? Yes, sir. यस सर। Okay, okay, okay. Okay, you just when you are again resolving this question, just go through my video and you can again try to solve it. Okay, I already mentioned the procedure how to calculate your VTH. You just go through the video and again you can solve it. Okay, and put some time to solve some problems like this. Okay, then only you can gain more idea regarding the Thevenin theorem. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Everybody can leave. Okay. Thank you, sir. Huh.